Good evening, all of you. Welcome to the 9th session of CHAMS. We've been holding these sessions every Tuesday at 4 p.m. to just make parents aware of the new changes that are taking place in education, and also to make our lives a little easier, because once parents understand and once parents are with us on the same level, we are thinking is the same, it becomes easier for us to shape the children. So I welcome all of you who are present today at the 9th session. And before we start, Mr. Ingle had something to say. So Mr. Ingle, can you just unmute yourself and say what you wanted to say? Thank you. There is no text or syllabus as such on this life skill. Exactly. So our school should have made. Ma'am, we know you have written some 6-7 standards तक ग्रामर की किताब आपने खुद ने लिखे हैं. वैसे ये भी लिखने पड़ेंगे आपको. ये भी आपको लिखने पड़ेंगे. ये लाइफ स्किल क्या है और बी अ लीडर. ये आपका देख के बाकी के लोगों को समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. और ये आपने अगर शुरू किया तो दैट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन पेरेंट्स. Now you can see very few parents are there present. So it will create some interest in the parents कि हमने कैसा सुधरना है. पेरेंट ने पहले सुधरना है, फिर बच्चे अपने आप सुधरते हैं. Exactly. ये जो चीज है, ये बहुत कठिन चीज है सुधरने के लिए, क्योंकि पेरेंट अभी तो सुधरने से बाहर निकल गए. फिर भी करना पड़ेगा बच्चों के लिए. ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. हाँ मिस्टर इंग्ले, बहुत ज्यादा सुधरने बिगड़ने की बात नहीं है. इसी पेरेंट्स की इंटेंशंस हमेशा अच्छी होती हैं. सो हम भी जब आपके यंग पेरेंट्स थे, हमने भी बहुत गलतियां की हैं. ऐसा नहीं है कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम ऐसे ही थे. हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ने हमको बहुत कुछ सिखाया है. सो आई वांट कि इससे पहले कि लाइफ सिखाए, आज हालांकि हमारे बहुत 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो काउंसलिंग के लिए आए, तो उनको भी मैं यही समझा रही थी कि लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन लाइफ के सिखाने से पहले अगर आप हमसे कुछ हमारे एक्सपीरियंस से सीख जाएं तो आपके लिए वो बेहतर होगा. अदरवाइज यही बताना. यस, बिटरली तो लाइफ सिखाएगी ही. That will be parallel to any 320 that you are doing the same job. I know you are the leader discussing the NEP 20. ऑल इंडिया लेवल के जो लोग बैठे थे उनके सामने आप डिस्कस कर रही थी एज ए लीडर. मुझे आप ये पता है कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट मिस्टर पीएम मोदी को बताए रहेंगे कि ये दिस इज टू बी डन, दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन. लेकिन ये हम कैसे इस्तेमाल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड के सारे स्कूल नहीं है. और अगर कोई अकेला चलता है तो बाकी के लोग उसको पीछे खींचते. तो हमको साथ में लेके चलना है सारे लोगों को. तो इंडिकेट करना है, ये सब लोगों में इंडिकेट करना है कि भाई ये ऐसा करो. Exactly. So you should be a leader. Yeah. You should be a leader in that case. Thank you. That was my point. Now I want to play a small video for you where I attended this conference, and what I wanted to tell you is कि हम ही नहीं, बहुत thinking इसके ऊपर बहुत अच्छी है. First, ignite the curiosity. Let the students have that freedom to ask difficult questions. And secondly, imbibe learning or education beyond the classroom. Two things that you think. Yeah. As it was said, it takes a village to raise a child. And today, that type of a situation is not there. So it takes a school to raise a child is what we need right now, So schools play a very, very important role, very critical role to bring about critical thinking. So what does school need to do? Give them opportunities, simulate situations which are essential for them so that they come out with their thought processes. Don't, and my take is never spoon feed the child. Express their ideas and accept them as adults. So whatever ideas that they are coming up with, you just grab those ideas from them and then you become a co-learner. You see, now
this kind of a thinking is going on all around the country. And that is why we have been, insisting on experiential learning activities. And today we'll discuss about how do they help. Why are we so much into experiential learning? Why are we insisting कि बच्चे projects करें, बच्चे visits पे जाएं, बच्चे बाहर देखें? क्यों ये हो रहा है? And this video I played out because I'm not the only one. ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ. पूरी education world की thinking अब इस तरफ जा रही है. So this is just to reiterate this fact. Now, how do experiential learning activities help? सबसे पहले तो जो भी बच्चा हाथ से करेगा या जो भी एक्सपीरियंस करेगा या जहां पर वो होगा बुक्स के बियॉन्ड जो वो करेगा उसमें उसका फोकस ज्यादा रहेगा. क्योंकि एक हमारी मेंटालिटी बच्चों की बन गई है कि जैसे उनको बुक्स का देते हैं उनको ओफो ये तो काम है, ये तो पढ़ाई है, तो उनका एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है कि ये पढ़ाई करने का टाइम है. जब उसको बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहा है and yet learning should take place. So the child is more focused because it's more exciting. Then emotionally a child is engaged. जो भी वो हाथ से काम कर रहा है उसका दिमाग, उसके हाथ, उसका मन सब एक जगह काम कर रहे हैं. So that accelerates the learning. कोई भी चीज जब आप मन से करते हो, अगर आपको गाना पसंद है और आप गाते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा गाते हैं और ट्राई करते हैं नहीं तो अच्छा गाने की. आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इक्वेशंस लर्न करो, बैठो और इसको रट लो, तो उसमें आपको कुछ भी लाइफ स्किल नहीं समझ में आती है, तो आपको देर में समझ में आती है. फिल्मी गाने क्यों जल्दी याद हो जाते हैं? क्योंकि हम उससे इमोशनली कनेक्टेड हैं. सो दैट इज व्हाई ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्प टू लर्न फास्टर. याद रहना, जो भी चीज हमारे मन को भाती है वो हमें याद रहती है. कितने कितने पुराने गाने हमें आज तक याद हैं, लेकिन अभी की पढ़ी हुई चीज हम भूल जाते हैं. अगर वही चीज हम इंटरेस्ट से करते हैं, अगर वही चीज हमें मालूम है कि हमारे फायदे के लिए है, हमारी लाइफ में काम आने के लिए है, तो हमें वो नहीं भूलेगी. इसी तरह it increases the reasoning ability. When you're doing something, you face problems. कि अगर एक पजल भी सॉल्व कर रहे हैं तो यू फेस अ प्रॉब्लम. नाउ व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम योर माइंड इज थिंकिंग अभी क्या किया जाए, इसको कैसे मूव किया जाए. नाउ विद दिस रीजनिंग एबिलिटी योर माइंड, योर ब्रेन सेल्स आर वर्किंग, योर माइंड इज वर्किंग एंड समवेयर यू फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच आर इनोवेटिव. So there is more scope for innovation. And like I discussed in my previous session, हमारे जो आगे की लाइफ है वो बड़ी इनोवेशन के ऊपर ही बेस होने वाली है. कौन लोग जो हैं वो आगे जाकर शाइन करेंगे, वो नहीं कि जो पढ़ के और उसको उगल देंगे, लेकिन वो जो एक नई चीज बनाएंगे. जो भी चीज आज मशीन्स कर सकती हैं वो स्किल्स सिखाना बच्चों को बिल्कुल बेकार है. अगर एक मशीन आपको कैलकुलेट करके दे सकती है देन उसको ये कैलकुलेशन सिखाना बेकार है. लेकिन रीजनिंग एबिलिटी जरूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो मशीन नहीं कर सकती है. उसमें आपको फीड करना पड़ेगा, उसमें आपको 4 चीजें फीड करेंगे, फिर वो रीजन करके सोल्यूशन निकालेगी. अब वो फीड क्या करना है ये आपको आना ही चाहिए. ना आगे के लिए टीचिंग इसी हिसाब से कैसे चेंज होने वाली है. सबसे पहले रटने वाली सब चीजें खत्म हो जाएंगी. लेस रोट लर्निंग, क्योंकि वो चीज जो आपको याद रखनी हो तो गूगल आपके लिए याद रख रहा है ना. कभी आप कुछ भूल जाएं, गूगल में टाइप कीजिए, वो याद करा देगा. सो व्हाई शुड यू लर्न? सो रोट लर्निंग इज गोइंग टू फिनिश. लेस ऑफ राइटिंग नोट्स. इससे पहले हम बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे, अभी ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना है. अभी चाहे हम उसे कितना ही क्रिटिसाइज करें, बट दिस इज आवर लाइफ. इसी तरह राइटिंग नोट्स इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. क्यों लिखेंगे हम नोट्स? क्योंकि जो भी है उसको कट कॉपी पेस्ट करके एंड वी विल पुट इट ऑन अनदर पेज. उसको नाउ व्हाट इज द स्किल वी नीड? ये तो हमने राइटिंग नोट्स तो नहीं करे, लेकिन द स्किल वी नीड इज कि उसमें से क्या रेलेवेंट पोर्शंस हैं. नाउ व्हेन यू सर्च एनीथिंग ऑन गूगल आपको इतना ज्यादा मटेरियल और उसमें से 90% यूजलेस मटेरियल मिलता है. Now you have to see what is useless and what is useful.
So for a brain to decipher कि इसमें से मुझे कितना चाहिए, you need the reasoning ability, you need the knowledge कि आपको उसमें से कितना चीज relevant है. So that is why making notes is out, but similarly deciding what you need is in. Now more journal keeping for results and observation will be, incorporated in education. Now you are saying कि notes तो बाहर हो गए, journals in हो गए. Now these journals are whatever you have experimented with, उसको आपने observe करना है और observe करके उसमें से क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, वो observations आप लिखेंगे और अपने पास रखेंगे. क्योंकि ये जो notes हैं जो आपने अपने experimentation से बनाए हैं, ये आपको useful होंगे to get more innovative ideas. Now this Google cannot give you. It cannot observe for you, it cannot decipher for you, it cannot give you extrapolated results. So this is the skill we have to teach our children. Now more why and how questions. Unless a brain is curious, unless children want to know, there will be no use of learning. So no matter whether it's language, whether it is science, whether it is maths, anything, what we need the children to do is to question all the time. You see, when you just take a 1.5-year-old to the market. Now, at least I noticed when my daughter was young and then my granddaughter was young, all the time that index finger was always pointing. Kya? Ye kya? Wo kya? Kyun? Kya? This is all the child can talk. And when you explain, the child may or may not be listening. But the finger is always there. The child is curious by nature. He or she wants to know. Now the moment the child is pointing to something and saying kya, because you see, world is a discovery for a child. The child does not know many things. So even if a child sees a new flower, he say, Mama kya? Now you are explaining कि उसका नाम rose है, उसका color ये है. Now by that time, the child's attention has shifted to another thing and the pointing has gone to another thing. And says kya? Then you shift your attention. Now you may think the child is not listening, but somewhere the child is imbibing. वो experiences एक layer पे layer उसके दिमाग में जमा होते जा रहे हैं. और जब जमा होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो उन experiences को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ रहे हैं. Now you have explained कि look baby, this is a rose. Now rose is red color. Now the child has gone to another place, उसको कहीं और उसने finger point करी है, you've gone to another this thing. Now tomorrow you go for a walk and the child sees a girl in a red dress. Now what has the child done? उसको कल का red याद है. The child will point and say, Mama, red, rose. Now somewhere the child has connected what you said yesterday with what the child is seeing today. Now these are natural things in children. Gradually what we do is we put a stop to it. When a child says, Mama ye kya? You are busy talking with your friend and say, Chup, kitna kya, kitna bata rahi hu? Why aren't you listening? So the child thinks that this is not the right thing to say. Child will stop asking. When the child stops asking, उसके पास experiences जो हैं वो रह नहीं जाते हैं for the child to observe, extrapolate and get results. So this is how gradually the brain gets dull. So very important to have the child ask all the time why and how. Now more opinion questions. अभी तक क्या था rote learning में factual questions थे. Who said this to whom? Question answer. Question answer में what did he say? Now what did he say to Jane is a factual question. जो book में दिया गया है, you have to write that. But why did Jane react so angrily? Now why is the child has to think उससे क्यों गुस्सा आया after all? ऐसी कोई बात हुई थी जो उससे कही गई थी जो उससे गुस्सा आया? So that reasoning ability. One child might say because Jack broke her toy. Another might say the toy was her favorite and she got angry because her father probably wouldn't buy her another toy. So something or the other they will think differently. Now in this reasoning, there are no right or wrong answers. But
You cannot say yes or no. Yes or no are not opinion questions. They are बिल्कुल तुक्के वाले questions. When you give yes or no questions, तो एक बच्चा अपने माइंड को एग्जर्ट नहीं करता है. वो या यस लिखता है या नो लिखता है, दोनों में से कुछ तो ठीक होगा ही. But justifying opinions. So write yes or no and tell me why. That means a child writes, yes, this is the correct option, but why is it correct? Or no, this is not the correct option, but why is it not correct? So justifying opinions is very important because the child then gets to thinking. Then more discovery through reading on the internet. Now, all of us till now have been telling children gadgets are bad, you should not use the mobile. But this 1 year, we have been giving gadgets. Ki padhai kijiye. Now, in this 1 year, the change that should have come about is the children, if we have not been able to bring about this change, that the child has enjoyed the learning process in the gadgets, has stopped playing games which do nothing to his personality or intelligence, and has started playing with apps which makes him, get more knowledgeable, then we are lacking in something. हमने इस साल को utilize नहीं किया है properly. अगर बच्चा हमारे जो सिखाए गए एप्स में अब इंटरेस्ट लेने लगा है, और या वो जो हमने सिखाया है इवन वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, कोलाजेस बनाना शुरू कर दिया है, कहीं देखते देखते जो भी वो डिस्कवर कर रहा था इन दिस प्रोसेस, उससे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिला है कि उसके पढ़ने की हैबिट हो गई है, या अच्छे अच्छे चैनल्स देखने शुरू कर दिए, देन वी आर सक्सेसफुल. बिकॉज देयर इज सो मच beautiful material available on the internet. So encourage your children to use the internet for reading and discovering new things. Another thing, how teaching will change is self-assessment. अभी तक हमारी लैंग्वेज में चीटिंग एक बहुत बड़ा वर्ड था. पनिशमेंट मिलती थी और उसके ऊपर बहुत रिडिक्यूल किया जाता था. Now in this year, we have been telling children, okay, आपने ये आंसर लिखा, अब ये लो आंसर व्हाट्सएप पे हम भेज रहे हैं और आप उसे चेक कीजिए. Now somewhere we are telling the child, I trust you. Now this feeling of being trusted brings integrity in children. So learn to trust the children. Tell the children, self-assess. जरूर वो 1-2 बार पहले चीटिंग करेगा, वो जरूर अपने आप को 20 out of 20 देगा और आपको मालूम है कि उसने इतना नहीं लिखा है. But gradually he'll realize कि it has no meaning because he's not learned और next time भी वो इतनी mistakes कर रहा है. So be patient, let him self-assess, let him do his own checking and develop that integrity where he knows कि मेरा cheating करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया. And that is why in the coming years, open book tests are going to be very, very important. ओपन बुक टेस्ट में आप क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जिसमें आप लिमिटेड टाइम में ये देखते हैं कि बच्चा ठीक आंसर ढूंढ पाया या नहीं. Exactly what he's going to use in life, because the skill is not in knowing the answer. The skill is in a particular time limit finding the right answer from the internet. सारे answers हैं, but can I find the right answer? So that is the skill we'll be developing in children. So another very important change that's going to come in the coming years in teaching is teamwork and collaboration. पहले जब हमने शुरू किया, dividing the children into teams and classes and उनको group projects दिए, तो बहुत resentment हुई क्योंकि उस group में से 4 का अगर group है तो एक बच्चा actually बहुत काम कर रहा था, दूसरा उसे थोड़ा help कर रहा था, तीसरा बिल्कुल बिंदास कुछ नहीं कर रहा था कि ये तो कर ही देंगे, मार्क्स मुझे मिल ही जाएंगे, और जो चौथा है वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था या थोड़ा कर रहा था, नहीं कर रहा था. नाउ पेरेंट्स की क्रिब ये थी कि मेरे बच्चे ने सारा काम किया और मार्क्स चारों को मिल गए. नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट कि आपके बच्चे को नहीं मिले, प्रॉब्लम इज कि बाकी 3 को क्यों मिले. नाउ दिस होल एटीट्यूड हैज टू चेंज, बिकॉज व्हेन इट इज टीम वर्क, चिल्ड्रन विल रियलाइज कि किसी भी टीम में, whether it is workplace, whether it is school, whether it is learning, anywhere, जब भी एक टीम बनती है, everybody is not equal. Everybody has different talents. So they must know how to discover the right talent.
Now today I'm the principal of a school. My job is not to do everything myself, but my skill lies in finding the right people to do the job. अगर एक जो टीचर है वो डांस गाने में अच्छी है, and if I tell her कि नहीं आप ये नहीं काम करवाओगे, आप एनुअल फंक्शन में स्क्रिप्ट लिखोगे, the failure is mine because I have not recognized her talent. I must find somebody, the right person to write the script, the right person to do the dance and song, the right person to do the video. So my skill isn't that. Your children are growing up to be managers of life if nothing else. So they must know किससे कौन सा काम करवाना है. इसी तरह टीम वर्क में एक लीडर इमर्ज होगा ही होगा, एक जो कंट्रोल लेगा. Now everybody does not have to be a leader. Can you imagine in a school if everybody is principal? So it cannot run. One leader, but the leader has a responsibility to develop small leaderships. आप इसके लिए responsible हो, so you are the leader for this. आप इसके लिए responsible हो, you are the leader for this. So unless that skill is developed in schools, the children will never be responsible adults. Now how will assessment change in the coming years? अभी तक हम marks देते थे, right है तो 10 marks, नहीं है थोड़ा कम है तो 8, 6, 4, 0. But now, and what used to happen was पूरे साल के बाद बच्चे सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते थे, और फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आए कि वो इंट्रोड्यूस हुए तो ओनली हाफ ईयरली एंड फाइनल. सो चिल्ड्रन वर नॉट लर्निंग. उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता था कि 10 दिन पहले खूब पढ़ाई करो, खूब खोटा लगाओ, vomit it out on the paper, get marks, and then they're called intelligent. So all this is going to go. Continuous assessment. You are being assessed for each little action. अगर आपने क्लास में एक असाइनमेंट सबमिट किया है, उसके लिए भी मार्क्स हैं. एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए भी हैं. एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है, उसके लिए भी है. डिबेट में पार्ट लिया है, उसके लिए भी है. So these are different skills being tested. Now suppose we make a project, one integrated project. अगर आपने उसको बनाने में कितनी इनोवेशन यूज करी है, कितना उसमें आपको साइंटिफिक नॉलेज दिया है, ऑल दैट इज बीइंग असेस्ड. उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन कैसे किया है, आर यू एबल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए मार्क्स. आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के लिए मार्क्स, आपकी नॉलेज के लिए मार्क्स. सो इन वन प्रोजेक्ट यू आर बीइंग असेस्ड फॉर 4 different things. So this is going to be a continuous assessment. There will be no examination pressure again. Because of this pressure, we have seen many children who are committing suicide, going through anxiety, depression. So when there is no examination pressure, it is any pressure which is over a long period of time gets diluted. So they will start taking it in the normal, day-to-day work. And they will learn to excel in everything that they do, because everything is being judged. Then more comprehensive assessment. ऐसा नहीं है एक चीज को एक एस्पेक्ट के लिए असेस किया जाएगा, उसका लर्निंग क्या का जो लाइफ के ऊपर इफेक्ट है वो क्या है, वो जज किया जाएगा. Now I want to show you a small video. Now a scooter has 2 tires. Now these are the kind of questions that are going to come to you. So a scooter has 2 tires, a spare tire. Each tire can run 20,000 kilometers before it gets worn out. How many kilometers can the scooter run maximum by using all the tires? Now this is not a subject book question. इस तरह के जो question है will develop reasoning, will develop logic in a child. A scooter has 2 tires and a spare tire. Each tire can run 20,000 kilometers before it gets worn out. How many kilometers can the scooter run maximum by using all the tires? 60,000, 30,000, 40,000 or 25,000? Now, the scooter has 3 tires, 20,000, 20,000 and 20,000. It runs 10,000 kilometers. The 2 tires have 10,000 left. Now change the front tire with a stepney.
The 20,000 kilometer tire comes to the front tire. After another 10,000, change it back. Now by the end of it, the scooter would have traveled 30,000 kilometers and all the tires would be exhausted. Saw just now is a sample question paper by IIT Bhubaneswar. They are going to talk about thinking skills rather than mugging up concepts. So this time the students are not required to actually mug up anything, and that's the reason 80% of your question paper is going to be more oriented towards multiple choice questions and only 20% related to descriptive answers that are also based on the student's opinion. So you don't really have to make the students memorize what is photosynthesis or define reflection of light or all those things. The term called as what do you mean by, or define, all these things will get away. We have all crosses Bloom's taxonomy, from Bloom's taxonomy, lower order thinking skills to higher order thinking skills. So we are just reaching over there, and the question paper pattern is also going to be like that. So I just wanted to say that. Second thing is, with respect, when thinking is oriented, one important tool that can really add a lot of value to the student's thought process is coding. And that's the reason this particular education system, the new one, they're incorporating coding right from the grade 6 onwards. Do you know there's a country, which is the country which started coding first? The first country to start coding as the concept in the schools was, Israel, 20 years back. But that's one of the best education systems in the world when it comes to thought process. They give manners first priority, which was actually copied by Japan, then Singapore, and that's how it is. It's not copied as such, it was adopted. In fact, even Finland. In Finland, in fact, the first time when the child is coming to the school is going to be when he or she is 7 years of age. It's not even 5. In fact, in India, it's like 3 years of age. So Finland is allowing the students to get more exposure. Go out, meet the people out, and have that cognitive development, and then let's come back to the school and start learning things. That's the second update with respect to incorporation of coding in other countries. Here. Okay, so now you heard him. Now this is the future of education, and why I played this video is these are the kind of conferences and these are the kind of webinars we attend. And if I cannot transfer it to the parents, there is no point my getting all this knowledge. So the whole world is acknowledging that this is the way to learn. Now, how are we going to actually teach it in schools? One very important tool of teaching this is brainstorming. Brainstorming is questioning, imagining, discussing. उससे creative ideas आते हैं. So, अगर कोई भी बच्चा आपका कुछ argue करता है, कुछ discuss करता है, उसे कभी भी shut up मत कीजिए. उसे हमेशा encourage कीजिए कि very good, और उसमें आप जो हैं equal partners रहेंगे. Now, this is why parents need to be very, very aware. अगर आप ही उसमें debate discussion में part नहीं ले सकेंगे, तो बच्चे को आगे कोई stimulus ही नहीं है आगे कुछ बोलने का. आज बच्चे ज़्यादा पापा समझेंगे नहीं. Now, would you like it when they say मम्मा तो समझेंगी नहीं? मतलब कि the child also knows कि आप इन चीजों में interested नहीं है और नहीं part ले रहे हैं. So that is why it's very important for you to attend these sessions, to know what is changing, what is education, क्या हो रहा है, so that when you sit with your children, you are equal partners in discussion. Discussion से क्या होता है? Pros, cons सब discuss होते हैं. A child knows कि कुछ भी absolute नहीं होता है. Things can be right, things can be wrong, and things can be both right and wrong. So these kind of things are very important. Now, there's the thing, when I have a kid who's 8 years old right now, so pretty young, and you get very nervous, when she's sitting just in front of the screen. What exactly is she doing? It's so interesting that the kind of things which happen during this COVID is, or during the teaching is, that implementation of what you were doing. So when I say that, for example, they had discussions and they had breakout rooms where the kids were actually, let's say they've studied just nutrition. So they were around groups of 5 kids who were sitting in a breakout room, not manned by the teacher, but just sitting in there discussing to make a meal, which is your
So you see, when we've short of time, so basically what the parent was talking about is कि जब वो बच्चे आपस में भी डिस्कस करते हैं, they are brainstorming, एक दूसरे की जो भी डिस्कशन है, जो भी टॉपिक है, उसको थ्रैश आउट कर रहे हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. So this is what we also try now in classes. Storytelling. Now storytelling is not कि एक था राजा एक थी रानी और पहले वाले storytelling. Storytelling is अब आप एक स्टोरी बताते हैं और उसको आधा छोड़ देते हैं, उसके बाद बच्चे इमेजिन करते हैं आगे क्या हुआ होगा. So इस तरह का जो storytelling sessions हैं, they are very important. Debates, discussions, role play. Role play से आपकी emotions बाहर निकलती हैं, आप drama activities देते हैं. Then breakout rooms, as the lady was saying, breakout rooms में क्या है, बच्चे आपस में discuss करते हैं. And of course, what we have talked about, experiential learning. So in the 21st century, the skills that we will require are critical thinking, reasoning, लॉजिक, उससे हमारी थिंकिंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, हम नया क्या बना सकते हैं, दैट क्रिएटिविटी, एंड कम्युनिकेशन, हम अपने आइडियाज दूसरे को कैसे समझा सकते हैं. अब दिस बॉय दैट यू हर्ड, यंग बॉय, इतने वेबिनार्स लेता है, बट ही इज सच अ गुड कम्युनिकेटर, वी लुक फॉरवर्ड टू हिज वेबिनार्स. So this kind of communication is very, very important. And सबसे ज्यादा जरूरी citizenship and character. This is what the schools should be teaching and will be teaching in a big way from now onwards. Because what we see is इतनी education के बाद भी हमारे बच्चे जो हैं वो good citizens नहीं बन पाते हैं. Whether it's honesty, whether it's cleanliness, whether it is anything thinking about the country, they are not able to think about the country as their own. So that is very, very difficult. So this is again going to be a part of the school curriculum. And all these skills are embedded in the NEP. Whether it is life skills, experiential learning, MCQ questions, reasoning, ये सब जो चीजें हैं, NEP has now put in our syllabus. Vocational training is going to be a very important part क्योंकि vocational training life skills के अंदर आनी ही चाहिए. So all these subjects are going to be taught in schools as vocational training. So, you know, your children should be able to earn a living. Good. So we have time for only this much today. We see you on the 23rd of March, 4 p.m.